Next, balancing financial goals vis-a-vis sustainable growth rate. The concept forces the managers to consider financial consequences of the sales increases and to set the sales growth goals that are consistent with the operating and the financial policies of the firm. Question concerning the right distribution of the resources may take difficult shape if we take into consideration the rightness of not for the current stakeholders but also for the future stakeholders also. यानी यहाँ पे वो लोग किसका बात कर रहे हैं? सस्टेनेबल ग्रोथ रेट. शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं लेना है, सस्टेनेबल वी विल बी एबल टू ग्रो उसका डिसीजन लेना है. सस्टेनेबल ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट टू एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट. टू फास्ट or too slow growth will go against enterprise growth and development. So financial should play an important role in the enterprise development. Adopt suitable financial policy initiative to make sure enterprise growth speed close to the sustainable growth ratio and have sustainable healthy environment. बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स वर्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ, उसका एक एग्जांपल दिया है हमको. टू टेक एन इलस्ट्रेशन लेट अस रेफर टू द फ्यूल इंडस्ट्री. तो उन्होंने ऐसा एक एग्जांपल दिया फ्रेंड्स कि फ्यूल इंडस्ट्री में क्या होता है कि फ्यूल इंडस्ट्रीज खुद ही ऐसा बोलता है कि यूज लेस फ्यूल, सेव पेट्रोल. तो बेसिकली क्या हो जाता है, जैसे उनका सेल्स कम करने के लिए वो लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है दैट से जो स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ ऑयल, स्टॉक ऑफ से दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. तो अगर उसको हमने आज यूज कर दिया सब कुछ, तो फ्यूचर में वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. सो दे आर लुकिंग फॉर से द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट वेयर द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी and a judicial use of the resources is needed to cater to the need of the future customers along with the need of the present customers. One may have noticed that Save Fuel campaign, a demarketing campaign that deviates the usual approach of the sales growth strategy and preaches, यानी वो लोग ऐसा लाइक सलाह देते हैं for conservation of the fuel for their use across generation. तो हम लोग बचाएंगे तो बाद में वो लोग यूज कर पाएंगे योर नेक्स्ट जनरेशन. This is an example of the stable growth strategy adopted by the oil industry as a whole under the resource constraint and long run objective survival over the years. Incremental growth strategy, profit strategy and cost strategy are the other variants of the stable growth strategy. This is again an important question. What makes an organization financially sustainable? तो उसके लिए आंसर ऐसा है, एक, हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ द इनकम. दूसरा, हैव मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम. तीसरा, डू स्ट्रेटेजिक एक्शन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग रेगुलरली. चौथा, हैव एडेक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम्स. पांचवा, गुड पब्लिक इमेज. Sixth, be clear about its values and value clarity. Seventh, have financial autonomy, यानी कोई भी commitment नहीं है say to pay the outsiders. And of course, mentioning all of them are important in such question. Sustainable growth rate concept by Robert C. Hingis of the firm is maximization rate of the growth in sales that can be achieved given the firm's profitability, asset utilization and desired payout and debt, that is the financial that is the ratios. तो फ्रेंड्स, ग्रोथ रेट का एक फॉर्मूला हम लोग ऐसा समझते हैं, इट इज बी इंटू आर. बी का मतलब क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी
आर का मतलब क्या हो, सॉरी, बी का मतलब क्या होता है, रिटेंशन रेशियो, तो वो आपका डिविडेंड पॉलिसी रिफ्लेक्ट करता है। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। एट द सेम टाइम से वी अंडरस्टैंड दैट से द रिटर्न ऑन इक्विटी, इसकी बात कर रहे हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज नेट प्रॉफिट रेशियो into asset turnover ratio into equity multiplier। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। असेट टर्नओवर रेशियो कैसे होता है, सेल्स अपॉन असेट्स। इक्विटी मल्टीप्लाई कैसे होता है, असेट्स अपॉन इक्विटी। तो देखो, सेल्स सेल्स कैंसिल हो जाएगा, असेट्स असेट्स कैंसिल हो जाएगा, and we will be having net profit upon equity is the return on equity, that is R। now let us read this again। वो लोग क्या कहना चाहते हैं, that maximum rate of the growth in the sales that can be achieved given the firm's profitability। तो देखो, सेल्स के ग्रोथ की बात कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, असेट यूटिलाइजेशन तो इसकी बात कर रहे हैं, एंड द डिजायर्ड डिविडेंड पे आउट, सो वी अंडरस्टैंड दैट से इसकी बात कर रहे हैं रिटेंशन रेशियो की, एंड डेट फाइनेंशियल लेवरेज इसकी बात कर रहे हैं। असेट्स अपॉन इक्विटी क्या होगा, दैट इज इक्विटी मल्टीप्लायर। सपोज दिस इज 3, then in that case for every 1 rupee of equity 3 rupees asset। इसका मतलब ये है कि बाकी का 2 रुपया डेट फाइनेंसिंग होता है। तो ये इसकी बात कर रहे हैं, इसको ड्यूपॉन्ट चार्ट बोला जाता है, ड्यूपॉन्ट। The sustainable growth rate is a measure of how a firm can grow without borrowing more money। After the firm has passed this rate, it must borrow funds from another source to facilitate the growth। Variables typically include is net profit margin, that is NP ratio, new and existing revenue, asset turnover ratio, that is S, sales upon assets। asset turnover ratio क्या बताता है, कितना सेल्स है कंपनी का फॉर एवरी 1 rupee of the asset, which is the ratio of the revenue to the total assets। the assets to the beginning of the period equity ratio, इन्हीं equity multiplier की बात कर रहा है, assets upon equity। रिटेंशन रेट, तो इन सब से क्या हो जाता है, इन सब से अपने को आर मिल जाता है। बी स्टैंड फॉर द रिटेंशन रेशियो, which is defined as a fraction of the earning being retained in the business। so देखो, sustainable growth rate is B into R। B stands for this, 1 minus dividend payment is B retention ratio, R is the rate of earning। Sustainable growth rate model assumes the business wants to maintain the target capital structure without issuing new equity। यानी हम लोग हमारा एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करेंगे और विदाउट इश्यूइंग न्यू इक्विटी, और वी कैन से दैट्स अगर हम लोग इक्विटी रेज करेंगे ना, तो साथ साथ में वही प्रपोर्शन में डेट इश्यू करेंगे जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर परमिट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा डेट इक्विटी रेशियो है 1, तो अगर हमने 5 लाख का इक्विटी फाइनेंसिंग रेज किया तो साथ साथ में 5 लाख का डेट फाइनेंसिंग भी रेज करेंगे। मेंटेन अ टारगेट पे आउट रेशियो, सिंपल। Increase the sales rapidly as the market conditions allow। Since the assets of the beginning of the period to equity ratio is constant, यानी equity multiplier का बात कर रहे हैं, and the firm's only source of the new equity is retained earning, sales and asset cannot grow any faster than the retained earning plus additional debt that the retained earning can support। तो देखो, वो लोग कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि डेट इक्विटी रेशियो है फॉर एग्जांपल हमारा 1:1। हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस से वी हैव लेट अस से दैट द रिटेन अर्निंग ऑफ 5 lakhs, तो हमारा डेट फाइनेंसिंग भी क्या होगा, एडिशनल 5 lakhs, और ये टोटल क्या हो जाएगा 10 lakhs, ऐसा बोलना चाहते हैं। देखो ये लोग क्या बोलना चाहते हैं, एंड द असेट्स कैन नॉट ग्रो any faster than the retained earning plus the additional debt financing that the retained earning can support। However, the firm willing to issue
additional new equity. There is in principle no financial constraint on its growth rate. तो ये रेस करेंगे, साथ साथ में ये रेस करेंगे, and we will be having so the unlimited so the growth potential. Indeed, the sustainable growth rate formula is directly predicted on the return on equity. है ना, that is net profit upon equity or net profit ratio into asset turnover ratio into equity multiplier. DuPont chart वाला concept है ये. Economists and the business researchers contend that achieving sustainable growth rate is not possible without paying heed, means without say paying importance to twin cornerstones. Cornerstone का मतलब क्या होता है? जो एक घर होता है उसमें जो साइड वाला जो हिस्सा होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा बेस होता है. That is important part. Growth strategy and growth capability. Companies that pay inadequate attention to one aspect or the other are doomed, that is, are bound to fail in their effort to establish practice of sustainable growth, though short-term gain may be realized. After all, if a company has excellent growth strategy in place but has not put the necessary infrastructure in place to execute that strategy, long-term growth is impossible. The reversal is also true. यानी कि अगर हमने ये सब रखा हुआ है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सकता है. The very weak idea of the sustainability requires the overall stock of the capital asset should remain constant. The weak version of the sustainability refers to the preservation of the critical resources to ensure support for all over a long time horizon. The strong concept of the sustainability is concerned with the preservation of the resources under primary, that is important ecosystem of the function. These are in line with the definition provided by the economist in the context of the sustainable development at macro level.